जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। आप लोग खैरियत से हैं जी? जी सर। शुक्र अल्लाह का। चलें भाई, that's great. Uh, should we start, the formal class now? Yes, sir. So we have got 21 participants right now, and few are waiting. Let me admit all. Fine, fine. I'm gonna start my lecture, and people they would be joining us meanwhile. I'm going to mute all of you. There is distortion. Going to mute all of you. Yeah, right. Thank you. Let me share the screen so that we would be able to interact properly, and I could show you the slides and the material we are about to discuss now. Kindly keep your microphones closed, please. Right, I mean it causes distortion. Share. I'm going to share the screen, right? Today we are going to discuss this one. Okay. Here. Is my voice clear to everyone? Yes sir. Okay. Yes. Okay, right. If you have the book, this is chapter number 3, and we have started a topic in previous class. There was outsourcing, make versus buy. By the scene. Yeah. This is this is page number 57. If you have the book, you can refer to Yes, that. sir. If you do not have, so I can send this file to you, and you can consult this one. Right, distortion. There's too much distortion. Let me again mute all of you. सर आप खुद म्यूट कर दें सबको सर, ये वैसे इन्होंने तो बात दिया ना। अशर शाह कौन है? जी सर। अशर बेटा आपकी तरफ से डिस्टॉर्शन है मुझे लगता है। सर मैं माइक बंद कर देता हूँ। आप अपना माइक जरा बंद करिए। चलें, माइक सब लोग बंद कर लें, कैमरा किसी का दिल करता है ऑन कर लें, नहीं करना ना करें। बस जब मैं कुछ चीज पूछूं तो यू शुड रिस्पॉन्ड, ताकि पता चले कि आप लोग सो तो नहीं गए। हाँ ठीक है। Right, Ji, this is the make versus buy continuum. We have started this topic in previous class, and let me recall you a bit about the topic. The organizations, they have to do a lot of activities, and they have to perform many operations on a daily basis. Right, few of them are strategic nature, few of them are non-strategic. This is very important to see for a company, for a firm. That it has to buy this thing, or it has to make it at its own. The few components or few systems or the subsystems when they are going to design a product or a service. So this is very important. I mean, when your firm is of gigantic size, your firm is of global one, multinational one, and you are going to address the needs of global consumers. So it is very important because it involves a lot of costs, right? And it involves so many things. So to extend that topic, there are few kind of integrations we shall discuss here. One is the vertical integration. Make and the point A is make an input or buy an input using the market. Fine. For example, you have simply two choices. If you can make the product at your own, in your firm, in your organization, in your company, you have got the right resources for it.
you have got the right research and development, you have got the right human resources, and you can properly manufacture the product at the controlled cost, fine, you can make that input it yourself. If you cannot do all that, if you cannot have all these things, then you have to outsource. Yeah, then you have to buy the products. And the B point is vertical integration versus market. Vertical integrations mean you can integrate backward, other forward, and vertical axis. For example, I mean, you're a company, you can integrate with your supplier, you can own your supplier, you can buy your supplier, or you can buy the products from the market. If you cannot have the resources to buy your supplier, then you would start purchasing, the raw material from different suppliers. So here is important concept that is known as the tapered integration. Tapered integration is a mixture or the combination of both, where a firm both makes and buys a given input. Of course, this is very important, and this is very obvious. This is very easy to understand also. A firm cannot do all activities, by itself, and a firm cannot outsource all of its activities from the market. I mean, both options are extremely costly, so you need to find a midway between, making the products that you own and buying all the products and spare parts and components and systems and subsystems from the markets. Both are extremely, expensive, and these are not workable simply. So you are supposed to find out, go in between these two choices. So that in between way, this known as tapered integration. When the firm tries to make few of the components and subcomponents or systems and subsystems at its own, and few of the components or systems from the market. Then is the collaborative relationship. Collaborative relationship is a bit advanced format of the tapered integration. So let me go in detail on the next page. Here is the tapered integration. Right? What are the benefits of tapered integration? Tapered integration means when your company is into the manufacturing process at itself, right? And company knows that what it takes to manufacture a product at its own. One thing, if you are not engaged in production business or manufacturing businesses, right, that would be very difficult to rely on the information which is available in the market, to rely on the resources which are available in the market, because you don't know. So your basic understanding with your manufacturing processes, with the cost structure, that is important. If you are not engaged, with production process, you cannot negotiate proper with your suppliers. If you are not familiar with the cost structures, you cannot buy the systems at the right price. And if you are engaged with, production processes or the manufacturing processes partially, then again, it's no problem. So you have the understanding, you can negotiate better, you can buy the product better, and you can understand the manufacturing process and time involved, the information and all the processes properly. So it is recommended depending on the size of the company, right? Depending on the products, how complex or how simple products you are going to manufacture in your company. So depending on these parameters, it is your choice that you would go for the tapered integration. Tapered integration is both, the combination of both things. So like you might have seen, there are few franchises. A company give franchises to the different people, right? And there are few company owned stores or the factory outlets. हाँ, ऐसा कुछ है ना? आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी एक ब्रांड पकड़ लें, राइट? उसमें क्या होगा, कुछ आपको उनके फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे जो एडमिनिस्टर वो खुद करते हैं, जिसको ओन वो खुद करते हैं, जिसको प्रोसेस वो खुद करते हैं, जिसको चलाते हैं वो खुद हैं, राइट? और बहुत सारे लोगों को उन्होंने अपना फ्रेंचाइज भी दिया होता है, राइट? और सेम इज द केस विद वो टोयोटा की एक एग्जांपल यहाँ शेयर करता है. ये देखें, टोयोटा इनसोर्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. वो टोयोटा का डेंसो इज वेरी पॉपुलर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. दिस इज, अगर आप, ये जापानीज है, दिस इज जापानीज, राइट? अगर जो लोग गाड़ियां जिन्होंने रखी हुई हैं और अगर वो पार्ट्स बाय करते रहते हैं और उन्होंने कभी एसी की सर्विस करवाई हो, या एसी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक कंप्रेसर है, लाइक उसका फ्रीजर है, और उसके अंदर और जो सब सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, अगर वो कभी आपने बाय की हो, तो डेंसो इज द मोस्ट रिलायबल वर्ल्ड वाइड, राइट? अब डेंसो वाज द सप्लायर टू द टोयोटा, राइट? तो वो जो डेंसो था वो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बना के देता था
टोयोटा को। अब जब टोयोटा को पता चला कि यार मेरी जो गाड़ी है राइट उसमें कोई जो कंटेंट जो मैं बनाता हूँ राइट वो 30% है और अराउंड 70% जो है वो मुझे आउटसोर्स करना पड़ता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो उसको ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ठीक है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक पोर्शन। लेट मी एडमिट फ्यू ऑफ द न्यू जॉइनिंग्स right initially it tells us right in 1988 the Denso was the sole supplier to the Toyota. Then later on the Toyota knows that 30% of the total vehicle content is electronics, right? And Denso was a supplier. So when Toyota came to know that electronics portion of the automobile of the car that is consisting of 30% and Toyota cannot manufacturing 30% of the electronics at its own. So it is buying or outsourcing from the Denso and few other suppliers. So Toyota is a perfect example of tapered integration because 30% of its electronics it buys from Denso and 70% of other strategic parts that are being developed by Toyota itself. So many companies, it's not with Toyota, many companies, and talk about the Boeing, talk about the Airbus, talk about the automobiles, talk about electronics, every industry that is okay with the tapered integration because it is difficult for a company, right? Collaborative relationship is another advanced form of tapered integration. अब collaborative relationship के अंदर क्या होगा, जैसे कि इसका नाम बता रहे हैं कि मैं ये नहीं करूंगा कि जी मुझे 5% आप बना के दे दें, मुझे कोई 10% जो मेरे सब कंपोनेंट्स हैं मैं किसी सप्लायर बी से बनवा लूं और मैं कोई अगले 20% जो है वो सप्लायर सी से बनवा लूं और जो रिमेनिंग 40% हैं ये जो स्ट्रेटेजिक हैं और जिसमें मेरी अपनी एक्सपर्टीज हैं जो कोर सब सिस्टम्स है वो मैं खुद बना लूं। दिस इज लाइक tapered integration. Collaborative relationship ये कहता है कि जो फर्म है उसको सप्लायर के साथ मिलकर काम करना है। फर्म हैज आइडेंटिफाइड 1 2 3 a few suppliers and they are working a long way together, right? मैं ये नहीं करूंगा कि मैं सप्लायर ए बी सी तीन के साथ काम करता हूँ, मुझे कुछ 10% ये 10% ये 10% ये देता है और फिर मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि यार अगर ये मुझे महंगा देंगे ये सस्ता देंगे तो मीनवाइल मैं मार्केट में किसी और सप्लायर के पास जाऊंगा। नो, अब होगा क्या, मतलब सप्लायर एंड फर्म दे हैव कोलैबोरेटेड, राइट? उन्होंने बड़ी एक ऑप्टिमम प्राइसिंग पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एग्रीमेंट में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि जी आप मेरी प्रोडक्ट डिजाइन में भी मुझे हेल्प करेंगे, आप इनोवेट करने में भी मुझे हेल्प करेंगे, आपकी प्राइसिंग भी मेरे साथ रीजनेबल होगी, हाँ मैं आपसे बल्क में बाय करूंगा और मैं आपसे अगले 20 साल बाय करता रहूंगा, मैं आपसे अगले 15 साल बाय करता रहूंगा, राइट? तो ये फिर tapered integration नहीं है। Tapered integration that is for a short term, right? And you might have multiple suppliers in tapered integration. It's collaborative relationship that's all about having very few number of suppliers, but very trustworthy relationship with the suppliers, and this is always long term, right? So collaborate करना है आपने, तो but जो supplier है they would be helping you innovating your product, designing your products, and they would be helping you in your strategic processes also, in your strategic and core processes also. So this is collaborative relationship. तो आपने यही देखना है कि मेरा ये जो continuum है, जो मेरा spectrum है make versus buy का, उसमें मुझे किस फेज में, किस स्टेज में, किस तरह के काम में कौन से वाला जो है स्ट्रेटेजी वो सूट करता है। Either I should go for tapered integration or I should go for a collaborative relationship. और ये भी मुमकिन है कि आपका चूंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, आपका सेटअप बहुत बड़ा है, your firm is of quite bigger size, तो आपको बहुत सारे सब सिस्टम और सब पार्ट्स और उसमें कंपोनेंट्स में tapered इंटीग्रेशन करनी पड़ती है और बहुत सारी चीजों में आपको collaborative relationship करना पड़ता है। So this is very important strategic and crucial decisions. इन छोटी छोटी चीजों से आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो रही होती है, इन छोटी छोटी चीजों से आपका जो रिस्क होता है वो कवर हो रहा होता है और इन छोटी छोटी चीजों से आप डिमांड को प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अपनी मार्केट में। इन छोटी छोटी चीजों से आपकी कंपनी का इमेज बन रहा होता है और आपकी जो सप्लाई लाइन है, जो डिमांड लाइन है वो स्मूथ काम कर रही होती है, स्ट्रीमलाइन काम कर रही होती है। सो इट इज स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ डिसीजन, इट इज क्रूशियल डिसीजन फॉर फर्म, फॉर अ कंपनी, एंड इट्स नॉट ईजी कि जी मैं यहाँ ये वाले इंटीग्रेशन कर लूँ, मैं यहाँ वर्टिकल में बैकवर्ड कर लूँ, फॉरवर्ड कर लूँ, टैपर्ड में चला जाऊँ, मैं कोलैबोरेटिव में चला जाऊँ। नो,
it is very, very, very difficult, very strategic kind of decisions. Sourcing strategy. Going ahead, I mean, this is page number 59. Sourcing strategy is portfolio approach. Right? Portfolio is what? Portfolio means आप लोग, you people are from, क्या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है और आपका इंडस्ट्रियल और इंजीनियरिंग, उस पर को अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी. व्हाट इज पोर्टफोलियो? कैन समबडी लेट मी नो व्हाट इज पोर्टफोलियो? सर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि अगर ये सोर्सिंग स्ट्रेटेजी है तो हम अपना पोर्टफोलियो डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कितनी % हम लोगों ने कहाँ से सोर्स करनी है. हाँ, ठीक है ना. पोर्टफोलियो से मुराद whatever your company is manufacturing, whatever your company is offering, whatever your company has to offer to the market, right? For example, मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास है सुजुकी कंपनी ना, सुजुकी कंपनी का पोर्टफोलियो कितना होगा, उसके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, सुजुकी के पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं. मेरे पास 800 सीसी की रेंज में कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास 1000 सीसी की कैटेगरी में क्या व्हीकल्स हैं, मेरे पास 1.3 कैटेगरी में कितने व्हीकल्स हैं, 1.5 में कितने हैं, 1.8 में कितने हैं या उससे आगे कितने हैं, फिर मेरे पास सेडान में कितने हैं, मेरे पास कॉम्पैक्ट कार में कितने हैं, मेरे पास कमर्शियल कार्स में कितने हैं, ट्रक्स. इस तरह की सारी चीज़ों को जब मैं पुल अप करता हूँ तो मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो बनता है. राइट? Whatever your company, whatever your company is dealing with, whatever your company is dealing in, whatever your company is manufacturing, whatever your company is offering, it's all, sum of all, the combination of all are, pulling up all the products and services whatever a company is offering. That's portfolio. Right? A portfolio approach that depends on two things. This is, the matrix we are going to discuss now. Here is the vertical axis or the y-axis, and this is the x-axis. Right on the vertical axis I have taken a parameter that's known as supply risk. This is supply risk. On vertical axis I have taken supply risk, and on x-axis I've taken the purchasing value or the value of the purchases. Right? So these are 4 quadrants. मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर. आपके अलावा बाकी वाम को समझ आ रही है? यस सर, आ रही है. अच्छा चलिए, मेरा बहुत जल्द इंशाल्लाह कोई 2-3-4 दिनों में, बस थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं अपने लेक्चर्स को कुछ रिकॉर्ड करके कुछ ये क्लासेस उसके अंदर करके डाल के मैं अवेलेबल करता हूँ किसी भी यूट्यूब चैनल पे, ताकि आप लोग उसको देख सकें प्रॉपर, और बुक भी आप लोग ले लें, और फिर उसके बाद कोई क्विज टाइप करेंगे ताकि वो आपके प्रेपरेशन फाइनल एग्जाम से पहले जरा अच्छा हो जाएगा. ओके सर. चलें. अच्छा, अब इस मैट्रिक्स पे आइए. देयर आर 4 quadrants. This one, this one, this one, and this one. Wait. This one is bottleneck products. We'll discuss in detail right now. And this quadrant is known as strategic products. Right. This quadrant, whatever that comes in this quadrant in this box, is known as routine products, and whatever that comes in this box at this quadrant is known as the leverage products. Fine. And here we are measuring the purchasing value, and here we are measuring the supply risk. Here is high, here is low, here is low, here is high. So everyone is seeing this. Everyone has understood this. Is it okay? यस सर. अच्छा जी, अब ये है क्या? अब मुझे अगर आप बता सकें, ये जो बॉटल नेक प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर क्या है? इज दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ, आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ सप्लाई रिस्क एंड व्हाट काइंड ऑफ परचेसिंग वैल्यू? Could you extract, I mean, some information out of this matrix? मुझे कौन बता सकता है कि बॉटल नेक प्रोडक्ट्स में क्या होगा? सर कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह की रुकावट या कोई प्रॉब्लम या हाइडल क्रिएट कर रही होंगी, जिसकी वजह से वो अपने मेन थीम तक नहीं पहुंच रहे होंगे. अच्छा, मेरे ख्याल में तुक्का मारने की कोशिश कर रही हैं आप, है ना? सर बोटल नेक प्रोडक्ट्स है ना, तो बोटल नेक क्लियर है. अच्छा, ये मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है? अभी छोड़ दें, वट एवर योर अंडरस्टैंडिंग इज विद द बॉटल नेक कॉन्सेप्ट के साथ आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप उसको छोड़ दें. अब मुझे बताएं कि ये मैट्रिक्स हमें क्या बता रहा है. ये मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? लेट मी मेक इट बिगर.
ये सर इसमें हाई क्वालिटी विद हाई प्राइस सप्लाई रिस्क हाई है फर्स्ट और सेकंड सेक्शन से परचेजिंग लोअर लो है। सर रूटीन है, इसलिए सर लो प्राइस विद लो क्वालिटी आएगा। नहीं, प्राइस वाली बात किधर है, क्वालिटी वाली बात किधर हो रही है? सर इन प्रोडक्ट्स के सप्लाई रिस्क की और उनकी परचेजिंग वैल्यू कि किस प्रोडक्ट में कितना रिस्क होगा और परचेजिंग वैल्यू से उसको रिलेट करेंगे इस मैट्रिक्स में, पहले जैसे एक्स मुझे एक्सिस और वाई। मुझे बताएं कि बॉटलनेक प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये हमें क्या बता रहा है? आप छोड़ दें, आप सारी चीजों को छोड़ दें, जस्ट फोकस दिस मैट्रिक्स, राइट? ये मैट्रिक्स में कौन से वाली प्रोडक्ट्स हैं जो बॉटलनेक प्रोडक्ट्स हो सकती? क्या हुआ, नहीं समझ आ रही बात? सर मे बी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स जिनके लिए हमारे जैसे सप्लाई रिस्क है कि कोई एक ही तरह का सप्लायर हो जो उन प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचाता हो, तो इसमें हमारे लिए रिस्क हो कि हम लोग इजीली उसको अवेल नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताएं, आपका नाम लारेब है जो आप बात करी हैं? जी सर। लारेब, आपके अलावा कोई और खवातीन बैठी हुई हैं? लेट मी चेक द पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन बैठा हुआ? लारेब इज देयर, माफिया इज देयर, और कौन है? आयशा, आयशा कौन है? जन्नत इज देयर। जन्नत कौन है? जरा जन्नत बात करे मेरे से। हेलो जन्नत, क्या जन्नत मेरे हम नाश्ता करने गई होगी? हैं? अच्छा, let me talk to माफिया। Where is माफिया? Yes, sir. हाँ जी, मुझे ये बताएं मैडम कि ये मैट्रिक्स हमें क्या बता रहे हैं? मतलब आपने कहीं नहीं जाना, आपने सिर्फ इसकी डायमेंशंस को देखना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और ये चार क्वाड्रेंट्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब बॉटलनेक प्रोडक्ट्स फॉर एनी फर्म, हाँ, क्या होंगी? बोटलनेक्स का उन्होंने ये कहा कि सप्लायर इसमें इसका हाई होएगा और परचेजिंग वैल्यू इसकी लो होगी एट टाइम। वेरी गुड। और स्ट्रेटेजिक में क्या होगा? स्ट्रेटेजिक में सप्लायर रिस्क हाई होएगा और इसका परचेजिंग पावर भी हाई होगी। परचेजिंग पावर की बात तो नहीं हो रही, परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू। परचेजिंग वैल्यू से मुराद के जो प्रोडक्ट आप बाय कर रहे हैं वो कितनी बड़ी अमाउंट की है, उसका वैल्यू क्या है आपके सिस्टम के लिए, आपकी फर्म के लिए। ठीक है, अच्छा चले, ये ठीक है, ये माफिया ने ठीक बताया। अब ये चार क्वाड्रेंट्स हमें बता के रहे हैं कि यार अब अगर हम इफ वी आर इन क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज बॉटलनेक प्रोडक्ट्स, इट मींस अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो वहाँ हमारा सप्लाई रिस्क बहुत ज्यादा है, और जो वैल्यू ऑफ परचेज या परचेसिंग वैल्यू जो हमारी फर्म के लिए हो रही है वो कम है, राइट? अगर हम इधर बैठते हैं तो इधर हमारे लिए क्या होगा? जो स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स हमारे लिए, अगेन उसमें सप्लाई रिस्क ज्यादा है, राइट? और लेकिन जो चीज हम बाय कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस, उसका वैल्यू भी हमारे सिस्टम, जो मेन स्ट्रीम सिस्टम है उसके लिए बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? इसीलिए तो वो स्ट्रेटेजिक है ना। चलें, अब इधर मैं इधर आ जाता हूँ। वो जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, रूटीन प्रोडक्ट्स में सप्लाई रिस्क नहीं है, लार्ज प्रोडक्ट वैरायटी है ना। ठीक है, आप मुझे आप भी वो चीज ऑफर कर सकती हैं, मुझे दूसरा चीज भी बंदा ऑफर कर सकता है, तीसरा भी ऑफर कर सकता है, और आपके पास अगर ये मल्टीपल सप्लायर्स ना भी हो तो आप अकेले सप्लायर के पास भी बहुत सारी वैरायटी है। मैं चीज ए बाय कर सकता हूँ, मैं चीज बी बाय कर सकता हूँ, मैं चीज सी बाय कर सकता हूँ, तो मुझे सप्लाई का इतना बड़ा इशू नहीं है। और चूंकि वो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं तो उनका इंपॉर्टेंस मेरे मेन स्ट्रीम सिस्टम के लिए भी इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, यस सर। चलें, अब लेवरेज प्रोडक्ट्स क्या है? लेवरेज प्रोडक्ट्स में क्या है? सप्लाई रिस्क कम है लेकिन उनका वैल्यू मेरे लिए बड़ा ज्यादा है। यस। चलें, अब वो क्या कहते हैं? अच्छा, वो कहते हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई अवेलेबल। ठीक है, कि जो लेवरेज प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जो है मतलब मेरे पास मल्टीपल उसके सप्लायर्स या सोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, मैं वहां से बाय कर लूंगा। दैट्स व्हाई मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है, राइट? मतलब क्या कि मुझे सब सिस्टम ए डेंसो से नहीं मिलेगा तो डेंसो के अलावा मुझे दूसरा बंदा उसका सब सिस्टम बना के दे सकता है, या अगर मुझे राइट ये वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा तो मैं ये वाला प्रोडक्ट बाय करके भी उससे गुजारा कर सकता हूँ, चला सकता हूँ। तो ये एक क्वाड्रेंट है जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच भी हम इसको बोलते हैं, राइट? या हम इसको क्या बोलते हैं?
सोर्सिंग स्ट्रेटजी। अब इसको डिटेल में जाके आगे डिस्कस करते हैं, जरा मुझे अगले पोर्शन पे जाने दीजिए। अच्छा चलें, अब यहाँ आइएगा। ये वो पहली चीज है जो रूटीन प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। अब ये जो डिस्कस करने पे आया है बुक वाला, तो वो पहले डिस्कस कर रहा है रूटीन प्रोडक्ट्स के क्वाड्रेंट को। दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी, वही फोकस ऑन। अब ये इस पे ना मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के इसकी डिटेल में इसकी कुछ परसेंटेजेस वो हमें बताने की कोशिश करेगा। राइट, दिस क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट्स सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी. The focus is on reducing the number of parts and number of suppliers, and the aim is to reduce administrative and logistics complexity. Right? Administrative और logistic complexity को मुझे reduce करना है। और अगर मैं इधर आऊं, ठीक है, नीचे इसको आके देखिएगा, वो आपको बताना क्या चाह रहा है। वो कहता है जो this was the routine, वो कहता है मेरा परचेज वॉल्यूम, देखिएगा मेरा परचेज वॉल्यूम जो है वो 15 से 20 25% है। 15 to 25% जो मेरी परचेज वॉल्यूम है वो रूटीन की है, और परसेंटेज ऑफ पार्ट्स 80 to 85% पार्ट जो हैं वो मेरे इसमें आते हैं। ज़ाहिर है छोटे छोटे कई ऐसे पार्ट्स होंगे जो आते हैं, लेकिन उनका परचेज वॉल्यूम सिर्फ 25% है। अब सुनिएगा, मैं कितना बल्क में बाय कर रहा हूँ, 80 to 85% पार्ट्स बाय कर रहा हूँ, लेकिन उनका वैल्यू सिर्फ 15 से 25% है। चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। Yes, sir. अब देखे ना, एक गाड़ी है, वो गाड़ी में मल्टीपल ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल के अंदर बेतहाशा पार्ट्स हैं, बेतहाशा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजन लगता है, 10,000 तरह की चीजें लगती हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स जो रूटीन प्रोडक्ट्स में है वो अप टू 85% तक चले जाते हैं, बट उनका वैल्यू सिर्फ। अच्छा, मैं इसको जरा इस कंट्रास्ट में देखिएगा, मैं इस अपोजिट साइड पे जा रहा हूँ। दिस वाज स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स क्वाड्रेंट, ऐसे ही है ना? यस सर। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, मेरा परचेज वॉल्यूम जो है, अच्छा नीचे ही है, परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कितने, 2 से 5% जो मेरे स्ट्रेटेजिक हैं, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, वो 2 से 5 ही, अकेले 40%, हाँ अप टू 40% उनका, हाँ जी 2%, 3%, 2 से 5 तक, 2, 3, 4, 5% तक मेरा 40% जो है वो परचेज, यानी उन 5% पार्ट्स की इंपॉर्टेंस अकेले 40% है। बात समझ रहे? यस सर। यानी अप टू 5% पार्ट्स, सिर्फ 5% पार्ट्स मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, तो उनका जो इंपॉर्टेंस है, जो उनकी वैल्यू है वो 40% तक है, और इधर 85% पार्ट्स की वैल्यू सिर्फ 15 से 25% है। इधर क्या है जी, ठीक है, दिस वाज बॉटलनेक। वो कहता है जी 10 से 15 हैं, 10 से 15 पार्ट्स हैं, लेकिन अगेन उनका इंपॉर्टेंस बड़ा ज्यादा है ना। अब वो प्रॉब्लम्स वाली बात है जो लारे बात कर रही थी बॉटलनेक्स वाली, कि इन पार्ट्स की परसेंटेज इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, वो 10 से 15 है, लेकिन 10 से 15 वो 8% तक मुझे करते हैं। और ये यहाँ कौन से वाले थे? दिस वाज लेवरेज। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है, इसमें जो परसेंटेज ऑफ पार्ट्स है वो 2 से 5% है, और जो इधर इनके इंपॉर्टेंस है वो भी अप टू 40% है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों केसेस में हमारे पास हाई क्या है, इधर तो हमारे पास सप्लाई रिस्क बड़ा हाई है, और इधर हमारे पास वो वाला जो वैल्यू भी बड़ा है। रिस्क लो है। इधर क्या है, रिस्क तो थोड़ा सा कम है, राइट, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत है। जी सर। ठीक है, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे मैट्रिक्स में आपने सबसे ज्यादा जान कहाँ मारनी है, सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहाँ अप्लाई करनी है, इन दोनों केसेस में। कहाँ? जहां आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, और आपकी उसकी इंपॉर्टेंस आपके मेन स्ट्रीम सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा है, राइट। इधर चलें, रिस्क तो थोड़ा कम है, यानी सप्लाई रिस्क नहीं है, सप्लाई ए से नहीं तो सप्लाई बी से मिल जाएगी, सप्लाई बी से नहीं तो सप्लाई सी से मिल जाएगी, प्रोडक्ट ए नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट बी मिल जाएगा, प्रोडक्ट बी नहीं मिलेगा तो प्रोडक्ट सी मिल जाएगा, लेकिन वो मिलना चाहिए, क्यों उसका, हाँ वो मिलना जरूरी है, क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंस है, जो उसका परचेसिंग वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप कैटेगराइज करने में, ये मैं दोबारा वापस यहाँ जाता हूँ, सो इट हेल्प्स यू टू कैटेगराइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सबसिस्टम्स, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर कंपनी, योर फर्म दैट यू यूज्ड इन योर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेसेस। कि यार मेरे लिए बॉटलनेक प्रोडक्ट्स क्या होंगी, मेरे लिए स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स क्या होंगी, लेवरेज प्रोडक्ट्स क्या होंगी, रूटीन प्रोडक्ट्स क्या होंगी। तो मुझे अब करना क्या है, अगर मुझे पता है कि मेरे लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट, ये सुनिएगा, अब इसको डिस्कशन ये है कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट है, एंड आई नो
कि इसके लिए सप्लायर रिस्क हाई रहेगा। यानी यार मुझे क्या करना है, यार मुझे सप्लायर ए से बना के रखनी है भाई, मुझे सप्लायर ए के नखरे उठाने हैं, राइट। अगर सप्लायर ए मेरे से रूट गया तो मुझे ये वाला पार्ट, ये वाला सब सिस्टम नहीं। अब टोयोटा को क्या है, टोयोटा कहता है कि मुझे 30% ऑफ पार्ट्स अकेले डेंसो बना के देता है। अब टोयोटा डेंसो के साथ लड़ नहीं सकता, हाँ जी, टोयोटा डेंसो के साथ हमेशा कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप लेके चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि यार टोयोटा है तो डेंसो है, डेंसो है तो टोयोटा है, राइट। तो जब आपको दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट नजर आ रहा है तो आप लोग लेके चलते रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप मतलब वो दरिया में भी रहें और मगरमच्छ से आप लड़ाई भी कर सकते हो, हाँ। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपने ये देखना है कि सप्लायर रिस्क हाई है तो आई हैव टू केयर फॉर माई सप्लायर, I need to take care of the relationship which I have developed with my supplier, because supplier risk is very high, because this product of strategic nature for me, because this is small portion of the product but it's important for my mainstream system, that's very high. So this is how. और leverage products के लिए वो कहता है कि यार चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे लिए सप्लायर रिस्क नहीं है, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इन चीज़ों को हमेशा बल्क में बाय करके रखना है, ये चीज़ें हमेशा इन स्टॉक रखनी है कि चने मुझे मिल भी जाएंगी, दैट इज गुड। बट अब ये कोविड-19 आ गया, फॉर एग्जांपल कोविड-19 दैट वाज अनफोर्सीन, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि 2020 आएगा और ये इस तरह का वायरस आ जाएगा और वो पूरी दुनिया को स्टैंड स्टिल कर देगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या है, अब अगर आपके लिए स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स हैं, सप्लाई में इशू हो गया तो फिर यहाँ मारे जाएंगे, क्योंकि पीछे से सप्लाई रुक गई किसी भी तरीके से और आपके लिए वो थी भी स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट तो नहीं है। इधर क्या है, सप्लायर रिस्क कम है, लेकिन अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस तो बड़ा ज्यादा है ना आपके लिए, राइट। रूटीन प्रोडक्ट्स और बॉटलनेक प्रोडक्ट्स चलें, बॉटलनेक प्रोडक्ट्स को भी केयर करना है, ऑफ कोर्स। ये सारी चीजें हैं फॉर अ सिस्टम, फॉर अ कंपनी, फॉर एन असेंबली लाइन, फॉर अ प्रोडक्शन यूनिट, तो इन सब का इंपॉर्टेंस जो है वो दिस इंपॉर्टेंट। बाकी डिटेल आप उसको अच्छा, we're going with another topic. Configuration of the supply base, reconfiguration. Again, वो बातें वही सिंपल हैं जो कॉन्सेप्ट वो मेक वर्सेस बाय में एक ही चलता है, ये उन्हीं पे बेसिस पे वो कहते हैं कि आप अपनी सप्लाई बेस को रिकन्फिगर कर लें। रिकन्फिगर का मतलब होता है रीसेट कर लेना चीजों को, हाँ। When you review the things, right, और आप ये देखते हैं कि अच्छा यार ये सिस्टम मेरे लिए ठीक था, ये सिस्टम मेरे लिए ठीक नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जो मेरा पिछला प्रोजेक्ट है, जो मैंने पिछली डिमांड पूरी की है, उसमें these were my problems, मुझे यहाँ पे मैं जाके फंस गया था, फिर मुझे यहाँ से ये करना पड़ा, यहाँ से क्लाइंट की ये डिमांड आ गई, मुझे बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा गाड़ियां बनानी थी, ये करना था वो करना था, तो उसके लिए मुझे जब इस सप्लायर ने ये पंगा किया, इस सप्लायर ने ये रौला डाला, तो फिर मैं इधर जाना पड़ा और वो करना पड़ा। सो आफ्टर कंप्लीटिंग वन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स एंड यू collectively sit together and you try to reconfigure, एक मिनट जी मैं ऐसा कर दूं, आपको म्यूट कर दूं, this is right. So now you are trying to reconfigure your supply base. So it's very simple. Again, move to system buying. अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए कंपोनेंट्स बाय करने आसान नहीं है, मतलब आपको 10,000 कंपोनेंट्स बाय करने हैं, आपको 2,000 कंपोनेंट की ओर से बाय करना है, 1,000 कंपोनेंट की ओर से बाय करना है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स एक सिस्टम से बनते हैं और आपको ये लगता है कि यार कंपोनेंट्स, मल्टीपल कंपोनेंट्स बाय करना मुश्किल है मेरे लिए, तो फिर आप सिस्टम को बाय करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल 10,000 कंपोनेंट्स हैं, they are being produced by 50 systems, 50 system, they produce 10,000 components. तो उन 10,000 कंपोनेंट्स को बाय करने के लिए उन 50 सिस्टम्स में से मैं कुछ 10 सिस्टम्स बाय करने की कोशिश कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा सप्लाई बेस रिकन्फिगर हो जाएगा, फिर उनमें से मैं खुद कैटेगराइज कर लूंगा इन 10,000 कंपोनेंट्स में से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से वाले हैं और इनमें ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कितने सब सिस्टम्स बनाते हैं, ये सिस्टम्स बनाते हैं, और एक सिस्टम उन 10,000 में से कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मेरे लिए डिजाइन करके दे सकता है। सो यू वुड गो स्ट्रेट to buy the system, not the components. This could be another concept. Second is reduce the number of suppliers per item or per system. Same as the case जिसमें एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ये करें कि जो सप्लायर
है उनको कम करें, आइटम और सिस्टम। यानी मैं कहूँ कि मेरे पास यार 6 सप्लायर्स हैं और वो मुझे 10 प्रोडक्ट्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँ कि यार प्रोडक्ट्स which are being supplied to me at ट्रेन and there are 6 suppliers, यानी 10 चीजें खरीदने के लिए मुझे 6 सप्लायर्स के साथ डील करना पड़ता है, 6 सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन रखना पड़ती है, 6 सप्लायर के साथ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और 6 सप्लायर के रिलेशनशिप को कैरी ऑन करना पड़ता है। तो दिस इज डिफिकल्ट। मैं क्या करता हूँ कि यार मैं 10 के लिए 6 नहीं, मैं कोई 2 सप्लायर्स करके, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि सप्लायर 2 हो जाएं और वो 10 में से कोई 8 प्रोडक्ट्स मुझे बना के देना शुरू कर दें, या मुझे रॉ मटेरियल आना शुरू हो जाए, या मुझे कंपोनेंट्स आना शुरू हो जाए। बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सप्लायर्स, योर स्ट्रेस, योर टेंशन दैट इंक्रीजेस। क्यों? कि उनका भी एक बार्गेनिंग पावर होता है, क्योंकि वो भी एक इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फोर्स होते हैं जो सप्लायर्स होते हैं। और अगर आप सप्लायर के साथ उस तरीके से नहीं चल पाएंगे तो सप्लायर दे वुड सिंपली स्टॉप सप्लाइंग यू the products, the components. Once the supplier of your raw material or components that's being stocked by some supplier, so this would of course distort your entire production and the manufacturing process. Your firm would be at stake, and you cannot handle the demand of your clients, right? So, so try to reduce the number of suppliers and try to uh, you know reconsider by it. the system. या बाय द सिस्टम भी करें, और कुछ इस तरीके से करें कि आप कोशिश करें कि आपके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स दे शुड कम फ्रॉम सेम सप्लायर, ना कि आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट सप्लायर्स रखने पड़े। यस, ठीक है। एक और 2 सप्लायर पे भी डिपेंडेंट होना, वो भी कल आपके लिए मसला हो सकता है। सो उसके लिए फिर आपका स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स क्या हैं, वो किस तरीके से आप चलेंगे, यही तो एक साइंस है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बंदे को डिस्टर्ब रखती है। इसमें ना वो एक फिगर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये फिगर 3.5 में आएगा। वो एग्जांपल ये वो आपको बताना क्या चाह रहा है। दिस इज टीयर 1, दिस इज टीयर 2, दिस इज टीयर 3। अच्छा, वो कहता है ये ऑटो असेंबलर है, उसका एक सप्लायर है, दूसरा सप्लायर है, तीसरा सप्लायर है, और दिस गोज अप टू सप्लायर नंबर 25। यानी उसने 25 सप्लायर रखे हुए हैं एक ऑटो असेंबलर ने। बात समझ में आ रही? यस सर। टीयर 1 एक तरह का एक लेवल क्या है, एक टीयर 1 में वो कहता है एक ऑटो असेंबलर है, फॉर एग्जांपल वो टोयोटा ही है, वो असेंबलिंग करता है, वो गाड़ियां बनाता है, उसके पास उसने 25 सप्लाई रखे हुए हैं। दिस कुड बी वन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, दिस कुड बी वन स्टाइल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अच्छा, सेकंड इज टीयर 2। टीयर 2 में